जो व्यक्ति चित्त की स्थिर सिद्धि प्राप्त करके और अंत में साक्षात that the person who controls his mind, in the end, the person directly attains Bhagavan. गीता में जो 18 जो नाम है, so Bhagavad Gita, क्या करना चाहिए? पाठ करना चाहिए. So we should always read the Bhagavad Gita. इसमें भी कहते हैं गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता. Gurudev is reading Gita. ब्रह्म बोली ब्रह्म विद्या त्रिसंधा मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परमानंदा तत्तार्थ ज्ञान मंजरी इत्तानि जपेत नित्यं नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं लभेत नित्यं तथान्ते परमं पदम. गीता श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य में So in the this is the glories of Bhagavad Gita. Glories of Bhagavad Gita. अतीव महत्वपूर्ण कहा गया. So the Gita is so glorious. Each part of Bhagavad Gita. भगवद गीता 18 अध्याय के द्वारा. So there are 18 chapters in the Bhagavad Gita. के तात्पर्य वर्णन किया गया. महाभारत के अंतर्गत. So the Gita is part of Mahabharata, and it's something that God Himself told with His own mouth. You know. भीष्म पर्व की 41 से लेकर के कितने तक? So from Bhishma Parva chapter of the Mahabharata. ना कितने अध्याय से लेकर, चलो अध्याय मैंने बोल दिया. गीता में इसलिए अभी जो कहते हैं ये यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं. So in the Gita we see गीता के 18 नाम बताया गया. So 18 names of the Gita. First name Ganga. Another name of the Bhagavad Gita. के साथ तुलना दे रहे. So Gita is compared to the Ganga. क्या जी? गंगा है. Yeah, one of the names of the Gita is Ganga. गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्म बोली ब्रह्म विद्या त्रिसंधा मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भावग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परमानंदा तत्तार्थ ज्ञान मंजरी इत्तानि जपेत नित्यं नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिं लभेत नित्यं तथान्ते परमं पदम. इस गीता में ये जो 18 जो नाम बताया गया, ये सारे नाम ही स्त्रीवाचक शब्द कहा गया. The 18 names of the Bhagavad Gita, they are all feminine gender names. So many people ask, okay, पुंगलिंग होता है. Srimad Bhagavatam is a male gender, गीता but the Gita, लिंग क्यों हो गया? why the Gita is feminine? महाभारत Feminine gender. Mahabharata is also masculine gender, but the name Gita, इसके स्त्रीलिंग क्यों कहा गया? why is it feminine gender? Bhagavad Gita. संशय आते कि नहीं आता है? So this doubt may arise. जिससे ये लोग लिखते हैं देवी भागवत, किंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं देवी भागवत शब्द. So people say Devi Bhagavata, but Gurudev said you cannot call Devi Bhagavat like the Srimad Bhagavatam a woman in the feminine gender. No, because Devi is a feminine word, and Bhagavatam, this word, is a masculine word. So you cannot use the word Devi Bhagavat. Cannot do that. You should say Deva Bhagavat, like in a masculine. Deva, not Devi. So Vyasadeva he was so pandit and learned and scholar, so लिख सकते हैं ऐसे गलत कैसे कर सकते हैं? Vyasadeva couldn't have made any mistake, you know. इसलिए 18 पुराण में So in the 18 Puranas, देवी भागवत की नाम, the name Devi Bhagavata you cannot find in the Puranas like this. Devi Bhagavat, no, because Bhagavata is masculine. कथावाचक, like many speakers of Katha or Pantas, they kind of ये देवी भागवत नाम करके they started calling the Bhagavatam Devi Bhagavat. पुराण के नाम ने उन्होंने चलाया.
saying that the Puranas call like this, but this is not true. Vyasadeva didn't call Bhagavatam Devi. So I heard from the direct mouth of lotus mouth of Gurudev. Gurudev said आरंभ में क्या कर दिया, that in the beginning, इसलिए कहते हैं देवी भागवत. so the speakers of the Bhagavatam, that they are saying Devi Bhagavata, from the beginning they are making mistake, because it's not possible to say Devi Bhagavata, because Devi is a feminine word and Bhagavata is a masculine word. तो देवी भागवती होनी चाहिए. So you should call देवी भागवती Deva Bhagavat. नहीं कर सकते हो. उन्होंने किया कि कोई बोबदेव नाम से जो है कोई व्यक्ति जो है उन्होंने ये प्रचलन कर दिया. So there is a man who started preaching this, like Devi Bhagavat. होता है ना, And people in this world, whenever there's something new, उसकी अधिक प्राधान्य देते हैं. तो पुराना people like something new, huh? जैसे Just like, for example, रामायण के कथा जब पाठ होते हैं कहते हैं महाराज if you're reading Ramayana Katha, कितने बार I Maharaj, 100 times I have already heard Mahabharat Katha, oh sorry, Ramayana Katha, 108 times. I know everything about this. गीता में जो 18 जो नाम है नित्य ही जो है क्या करना चाहिए, पाठ करना चाहिए. So every day we should read the 18 names of the Bhagavad Gita. कर लिया. अपन समाज के लोग क्या चाहते हैं, नई So के खोज. people of this world, they're always searching something new. They want something new, not something old. They want new things. नया कोई मंत्र हो तो महाराज जी ये तो मंत्र Maharaj, महाराज से ले लिया. I want a new नया mantra. कोई मंत्र तो कृष्ण मंत्र गायत्री मंत्र ये तो हमारे Krishna साथ mantra, Gayatri mantra. इतने दिन से Even my grandfather, everyone was chanting the same mantra. नया कोई मंत्र I want दे दो, something, some जिससे new आप mantra. देते हो. Give me some new mantra, Maharaj. संसार के लोग Because people in this world, जगत के लोग भौतिक विचार के अनुसार नया कुछ चाहते हैं. they, according to material conception, they always want something new. So my Gurudev Shlovamana Maharaj, he said, भाई नूतन किशु कर पायर जूता माथाई करके चल नूतन कुछ करो है नया कुछ की करो. क्या if you do something new, जूता तो सब पैर में लेकर के चलते हैं. like everybody is wearing shoes, everyone uses wear shoes. पैर के जूता क्या करो, So if you say, सिर पर लेकर के चलो. okay, आनंद होता so you want something new, you wear your shoes on your head, then this is something new. You feel bliss, you feel happiness if you do that. है. देवी भागवत की कथा जो है इसके प्रमाणिक कहा करके So Gurudev said that this word Devi Bhagavat स्थापन करना चाहते हैं. is not actually in the scriptures. इधर उधर के जोड़ देते हैं. And these Panditas, they justify themselves mentioning some katha of the Purana here and there. किसी को पैर They take some part of the scripture here, another part of the scripture there, one hand, one leg, one tail, अब क्या किसके नाम से चला दिया, and they made their own like व्यासदेव के नाम. Grantha, and they are saying that Vyasadeva wrote. Like they put together many different parts of many things and create many things and saying Vyasadeva wrote. देवी भागवत नाम है. But Vyasadeva, in any book that Vyasadeva wrote, he never wrote this word, Devi Bhagavata. No. पुराण है. There are 6 Sattvic Puranas, 6 Rajasic Purana, and 6 Tamasic Puranas in the mode of goodness, ignorance, and passion, the Puranas. बोलते थे. चलो हम जिस कथा हम श्रवण में आ रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय है. So there are 18 chapters in the Bhagavad उसी Gita. प्रकार गीता महात्मा भी कहते In the हैं. same way, the Gita Mahatma, the words of the Bhagavad Gita explains. 18 जो नाम बताया जा रहा है, The 18 names of Bhagavad Gita are all feminine names. All the 18 names of the Bhagavad Gita are in feminine gender. नाम गीता की समस्त नाम जो है कोई नित्य प्रत्यह चित्त If someone every day with his mind fixed, if he chants these 18 names of the Bhagavad Gita, नित्य the person will directly प्राप्त करके और परम सिद्धि attain, प्राप्त कर लेते हैं और the person will attain topmost प्राप्त कर लेते हैं. knowledge, and in the end the person will attain Lord. क्या कहें? गंगा So first name of the Bhagavad Gita is Ganga. गंगा नाम आ रहा है. गंगा गंगा. जैसे पवित्र है. Just like Ganga is so pure. गंगार परस होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण. गंगा स्नान करने से जैसे समस्त पाप If you bathe in the Ganges, नष्ट हो जाए. all your sins are destroyed. इसी प्रकार So in the same way, गीता यदि कोई स्पर्श भी करे, even if someone just, let's speak of reading the Bhagavad Gita, if only you
touch the Bhagavad Gita in your hands, से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाता all your sins are destroyed. है। हिंदू धर्म में भी ऐसे लिखा है, जैसे कोई हिंदू व्यक्ति So in the Hindu Dharma, Hindu religion, ज्वाइन करता है, if somebody is joining the army, हाथ में गीता रखा जाता है, they put the Gita in the hand of the person शपथ करके for the person to make a vow. धर्म को मैं पालन I make a vow that I'll follow all the rules of the army. कुरान, If a Muslim is joining the army, then he must put his hand on ये the समस्त जो है। Quran, and if it's a Christian, he has to put his hand on the Bible. उससे गंगा की नाम आ रहे हैं यहाँ पर, So one of the names of the Bhagavad Gita is Ganga. इसलिए कहे गंगा पवित्र जो है, इसके So Ganga is so गंगा pure. जैसे भगवान की नित्य प्रिया सखी भी माना जाता है। Actually, Gita is a Priya Sakhi of Bhagavan. वहाँ Dear गंगा friend. नाम से एक सखी भी है। Actually, in the transcendental world, there is गंगा a सखी के नाम Sakhi called Ganga शास्त्र में मिलता है, उसमें in the spiritual world. विरजा आदि Biraja, नाम Ganga. मिलता है। You can find these names in the Shastra of this Sakhi. और दूसरी नाम क्या रहे? गीता। Another name of the Bhagavad Gita is Gita. ये गीता जो है सब शब्दों में जो कहा गया So स्त्रीलिंग वाचक Gita, I told, is a feminine word. Ganga is feminine word, and Gita is also a feminine word. 18 नाम जो मैंने आपके पास कहा, 18 नाम क्या क्या है? So 18 names of the Gita. First, करके know about it. Then we will discuss them. गंगा गीता च सावित्री, सावित्री नाम Ganga, Savitri, so third name. So first name is Ganga, second Gita, third name Savitri, चौथी नाम क्या है? fourth name सीता, Sita, पांचवा नाम क्या है? fifth name of the Gita Satta, और छठवां नाम क्या है? पतिव्रता। sixth name Pativrata, और सातवां नाम क्या है? seventh name ब्रह्मबली। Brahmabali, आठवां क्या है? eighth ब्रह्मविद्या। Brahmaviddo, नौवां क्या है? ninth त्रिसंध्या। Trisandha, और 10वां क्या है? tenth मुक्ति। Mukti, Gehini, है। 10 11 क्या हो गया? 11th अर्धमात्रा। Ardhamatra, है। 12 नंबर क्या है? 12th चिदानंदा। Chidananda, और 13 में क्या है? 13th 13th Bhavagini, है। और 14 में क्या आ रहा है? 4th 14 नंबर में भ्रांति नाशिनी, Bhranti Nashini, समस्त भ्रांति की जो नाश करने वाले भ्रांति नाश। because Gita destroys all our illusions. 15 में क्या आ रहा है? 5th 15th 15 में क्या आ रहे हैं? वेदत्रयी। Vedatri, 16 में आ रहे 16th हैं परमानंद। Paramanando, 17 में आ रहे हैं 17th तत्तार्थ, Tatartha, तत्व अर्थ, तत्तार्थ। Tato Artha Tatartha, meaning of the truth. ज्ञान 18th Jnana Manjari, Jnana Manjari. नाम आ गए। All these names are in the feminine gender. भी करें So, in the glories of the Bhagavad Gita, it's also saying that স্থির চিত্তে করিয়া একাগ্র চিত্তে যোগ করিবেন, তিনি নিত্য জ্ঞান সিদ্ধি লাভ করেন, এইভাবে অন্তে পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। বাংলা শব্দ में in Bengali it's saying, in Hindi I think also you can find this book, but Gurudev is reading from Bengali. So if you chant these names every day, then you attain topmost attainment. गंगा जो चित जगत में ही So- गंगा की नाम बात बताया गया। So the name of Ganga, राजा आदि so I told that Ganga is also, प्रसिद्ध है, गंगा सखी भी है। the Ganga Sakhi is also there, Viraja Sakhi also. हम कराया आप लोग के निकट। I already told this story to you, that once यही गंगा Krishna और विराजे के साथ was है, एक performing निकुंज pastimes in the Nikunja with Ganga or Viraja Sakhi, और किसी प्रकार और बाहर and outside the Kunja, वो श्रीमती राधा जी के Shrimati Radhika, the brother of Shrimati Radhika, Sridham, he was like a और doorkeeper श्रीमती राधा के किसी प्रकार keeping the door. And Shrimati Radhika felt the smell that Krishna was inside. गंगा के साथ ये महाराज के टेबल दे दो क्या? Bring a table for Maharaj, please. भाई महात्मा। Oh, great soul. हाँ, उन्होंने क्या करे थे? गंगा के साथ मिल रहे थे और श्रीमती राधा जी इतने So Krishna was meeting Ganga, and Shrimati Radhika, she was so angry. She said, Shridham, let me go inside. Then Shridham said no. Then they were angry against each other. Shridham and Shrimati Radhika, they are brothers, right? So they cursed each other. Then after that, Shrimati Radhika went inside. जाने के साथ ही साथ कृष्ण ने उनको क्या कर दिया? इशारा कर दिए और साथ ही साथ वो अंतर्ध्यान हो गए। So immediately Krishna indicated to Ganga Viraja, and Viraja became a water. And Shrimati Radhika was like, who is here? Who is here? Then Krishna said, I'm alone, there is no one here. But Shrimati Radhika said, you are lying.
I can feel the smell of someone who was here, some woman. अंत में कृष्ण के मानना पड़ा और फिर उस समय Then in the end, कि उनको भी अभिशाप दे दिया, जाओ तुम जैसे अधिश्वर के यहाँ पर चले गए, जाओ तुम्हें मर्त लोक में जाओ। so है तो एक स्वरूप में वहाँ जो है मर्त लोक में इस जगत में आए, जिसको विरजा कहते उस जगत So Srimati Radhika cursed her. You have to come in the material world. प्रसिद्ध है, So this one form, she is this Viraja, कथा है। came to material world, and also in another form, she is Ganga. बहुत बार भी श्रवण किया Also, you know about her. वामन देव की चरण धूल So you told, there are many stories, also the story of Vamanadeva, that Brahmaji washed the feet of Vamanadeva and kept that water in his water pot. में जो है And in the end, there was a king in the dynasty of Sagar, Maharaj, a king called Bhagirat. सागर महाराज के 60,000 पुत्र के जो So Bhagirat, he had पड़ा हुआ था, made, कपिल देव की you know, the 60,000 of Sagar Maharaj, they had become ashes because of the anger of Kapila Deva. छाई भस्म। और तो उसी के जो है उद्धार करने के लिए So to deliver them, सागर वंश में प्रकट हुए, भगीरथ प्रकट हुए। Bhagirat appears in the dynasty of Sagar Maharaj, and he performed many austerities. जो है भूतल में And in the end, कराया। he made the Ganga appear in the world, ये समस्त in कथा the earth, का Bhutal. ही वर्णन है। Bhagavatam explains also ये this story, the Bhagavad. गंगा किस प्रकार पवित्र, So how Ganga is so pure. इसी प्रकार गीता के साथ तुलना दे रहे हैं। So the Gita is also compared to the Ganga. गंगा जिस पर पवित्र है, Just like Ganga is so pure, in the same way the Srimad Bhagavad Gita is also so pure. तो बहुत दूर की बात है। What to speak of only reading the घर Gita? में भी रखे, If only you keep the Bhagavad Gita in your house, में कभी भूत पिशाच भी never a ghost or है। witch will come in your heart, in your house. हिंदू मात्र The Hindus, they, ही क्या करना चाहिए घर all में? the Hindus, they must have in their house the Gita. मैं तो कित आज में हिंदू मात्र ही क्या करना चाहिए घर में? गंगा जल, They must have water of the Ganges, Srimad Bhagavad Gita, and the Tulasi Dev in the house. They must. नित्य व्रत को यदि गीता पाठ करे, And if someone reads the Gita every day, and if someone सचंदन तुलसी अर्पित करे, सचंदन every day offers also Tulasi leaf with sandalwood paste to the Gita, Bhagavan will become so pleased. नित्य गीता पाठ करने के लिए शास्त्र में कहा So गया। Shastra explains we have to every day ऐसे भी कहा गया, जब read the Gita. विचारश्च पठनं Gita Mahatma explains. कृष्ण भगवान श्री राधया सह, गीता महात्मा भी कहा गया। ये देखो कोई व्यक्ति गीता पाठ करते हैं, If someone is reading the Bhagavad Gita, Bhagavan becomes so pleased प्रेयसी श्रीमती राधा के साथ वहीं पर that Bhagavan will appear with his dear Srimati Radhika to that person who reads the Bhagavad Gita. है। इसलिए गंगा गीता भी नाम है। हाँ, एक शब्द जो मैंने कहा था, प्रश्न उठाया था, ये गीता स्त्रीलिंग वाचक क्यों कर दिया? Okay, so why Gita is in the feminine gender? I raised that जैसे question. महाभारत, गंगा, Just like, for example, in the Mahabharata, श्रीमद् भागवत गीता और तुलसी देवी की भी रखनी चाहिए। है, व्यक्ति गीता पाठ करते हैं, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, Ay, my gosh. अपने प्रेयसी श्रीमती राधा वाचक में दिखाया गया है। किंतु गीता जो है ये महाभारत में So Mahabharata is in the, है। so Mahabharata, देखना Gita is part of the Mahabharata from the Shanti Parva इसी गीता की ये है or Bhishma Parva. 18 अध्याय में से ये संग The 18 chapters come from the Mahabharata and of the Gita, and it actually Bhagavan himself told these verses. त्रयोदशी गीता जिसको गान करने से So if you chant Bhagavad Gita, है, you will be delivered. That's why the name is Gita. इसलिए गया क्यों कहा जाए कि स्त्री If you- में जैसे So why it's a feminine word, feminine gender, the Gita? Just like a woman is very affectionate सहनशीलता होती है, and very tolerant, उसी प्रकार गीता में ही उसी प्रकार कहा गया Gita is also like that. है। स्त्री में जैसे जिस प्रकार उदार Women, वाली they are so generous and उसमें थोड़ा compassionate. क्या होता है? Men, है, उदार नहीं होते हैं। men they are not so generous as women. स्त्रियों में क्या होता है? उदार But women, they are very इसलिए गीता like broad-hearted and generous. होने के नाते So that's why Gita is in feminine gender word, उदार चित्त वाली। because the Gita is very generous, it's giving to everyone. चलो अनेक प्रकार वैष्णव अनेक जो वैष्णव अनेक प्रकार व्याख्या आदि Many करते हैं। Vaishnavas they will describe, गीता नाम explain in many ways क्यों रखा गया? why the Gita is a feminine word, दूसरी है सावित्री feminine नाम gender. आने पर। Another name of the Gita is also सावित्री Sabitri. के नाम में
बारे में आप लोग So the सवाल किया। chess lady Savitri, you also heard about her. Another name of Gita is, उन्होंने किया जब महाराज के भी sorry, परास्त कर दिया। so Savitri, she was Pativrata, so focused on her husband and one pointed to her husband. श्रवण किया, कई बार हम लोग भी बताया। So many times Maharaj also told sometimes this सावित्री सत्यवान story of the Savitri in Satyavan. जो देखो उनके पति जो है So सत्यवान, husband of Savitri was Satyavan. He went to the forest to collect wood, उस समय firewood, उनकी मृत्यु भी हो गया। and he died. हैं? देखो उन्होंने क्या कि अपने He died. पतिदेव के स्पर्श करके रखे। And she just touched her husband, संग जब महाराज भी and then Jamaraj उनके could not आत्मा को लेकर के take the soul of the husband, of her husband. जम समस्त जमदूत तो सब The Jamadutas, the messengers of Jamaraj, came to take his soul, but they couldn't. अंत में स्वयं जम महाराज भी आ So गए। in the end, Jamaraj और came उस समय जब महाराज के पास करने लगे, देखो and जिसको told, मृत्यु होता है वो तो हमारी लोक में जाता है। look, those who die, they must go to my loka, my place. But she told, Savitri said, I am a chess lady, you cannot take my husband. है। तो जब महाराज ने कहा ठीक है, Jamaraj said, okay, कुछ वर मांग लो। so ask for some benediction. वर मांगते कहते मेरा Then she said, I want to have 100 sons. एमामस्तु। Then Jamaraj said, okay, I'll give you this benediction. शतपुत्र के तुम क्या बनो? माँ बनो। जननी। You'll be the mother of 100 sons. तो हमारी पति जी नहीं रहे। So if she doesn't have a husband, how can she have 100 sons? परास्त हो गया। So Jamaraj was defeated, and in this way, later, ऐसे भी कथा वो सावित्री yeah, सावित्री सत्यवान he had to go away because, शास्त्र में है। so the story of Savitri, she's so chaste. Another name of the Gita is Sita. देखो एक एक करके 18 नाम आ जाएगा। So the 80 names of the Bhagavad Gita, we'll see. So the name of Sita. Sita was so pure, अपने पवित्र के बल pure. सरित्र के By the बल से power of her chastity, उनको तो अशोक वाटिका में रख दिया। okay, Ravana had put her in the Ashoka Batika, that garden. नाश करने के लिए Ravan tried to come, he tried to destroy the chastity of Sita. And what Sita did? She took one blade of grass and she put in front of Ravan. She said, if I am chaste lady, निकट में आ जाए you cannot cross this blade of grass. If you cross this, you'll be turned to ashes and you'll die. Sita told. She just put one blade of grass in front of her, and by the power of her chastity, Ravana could not even come near her. सीता एक त्रिन के द्वारा So the Ramayana explains, with a blade of grass, Sita protected herself from Ravan and his impetus for lust. रावण पर प्रयास किया था बहुत। Ravana tried to come to her, you know, आदि के द्वारा with some dam, like he tried to persuade her in many ways for her to give in. He tried in all ways to try to make Sita to come to him. But by the chastity of her, by the power of her chastity, Sita was fixed in her resolution against Ravan. So another name also of the Gita is Pativrata. Pativrata, so Pativrata is when a person is dedicated to the husband completely. So उसमें आ रहता है, हम चित्रकूट में जाते हैं। when you go to Chitrakoot, we have who is Pativrata? अनुसुआ और The story of Anusuya अनुसुआ की कथा। and अपने Otri. पतिव्रता के बल So पर क्या because of her Pativrata being her quality of being one pointed to the husband, Anusuya she made Brahma, Vishnu and Shiva to become babies. आगे आगे हम वर्णन करेंगे। आज यहाँ तक रहे। So today we'll stop here because time is coming by. So these beautiful names of the Bhagavad Gita. So every day early in the morning after waking up, if you take the names of 18 women, so first we heard, if you take the name of 5 women, Draupadi, Kunti, Tara, Ahilya and Mandodari. If you take the name of these 5 ladies every day, if you remember these ladies every day, all the sins in your heart, they will be destroyed. But in the Gita Mahatma, the Glories of Gita, it's explaining, if you chant these 18 names of the women, also names of women, if you every day you chant these 18 names, and like reading Bhagavad Gita also, actually attain the topmost perfection. And then you will attain the topmost attainment, you will attain Bhagavan. So to attain Bhagavan, there's a very easy way. The other day I was telling some story. I'll just take 2 more minutes, okay?
पांच पंच पांडव एक समय भगवान कृष्ण The five Pandavas, one day they told Bhagavan, कलियुग के तो to Bhagavan तो आपने सुनाया, Krishna, Krishna, you told so many glories तो of हमें विश्वास दिलाइए कलियुग के महत्व है क्या चीज Kali Yuga, but भगवान प्राप्ति के लिए। what is the glory of Kali Yuga in attaining Bhagavan? Then Bhagavan said, लोग जो है 5 दिशा पर जाओ, 5 okay, I'll send you 5 Pandavas, each one of you going 5 चले जाओ। different streets and into different directions. So the Pandavas went. Did they say went in one direction in one street, to one direction? भीम एक गली में, Bhima went in another, like road, and Arjun, Nakul Sahadev, हैं, ये अलग अलग गली में गए। they went in different streets, in different directions. और देख करके मुझे बताना। So Krishna told them, okay, whatever you see, then you tell me what you see. महाराज एक गली में गया, जा करके So Yudhishthira went in one street. दो सूंड वाले हाथी वहाँ पर है, He saw 2 हैं, हाथी के 2 सूंड होता है क्या? हैं, बोले एक elephants मैंने with, देखा, ये दोनों sorry, I couldn't कलियुग understand. के मनुष्य के उसी प्रकार ही है। Then what is this I saw? The Krishna said, oh, human beings in Kali Yuga, अलग होगा, they're different from inside and outside. अंदर और बाहर अलग होगा। मुदु तिष्ठन्ति जिहा, Means that human beings in Kali Yuga, they are very, हलम, हैं, मुख में they are hypocrites. They will speak nice words in their mouth, but in their hearts, भरा रहेगा, they are full of कपट duplicity and hypocrisy. बीज भरा रहेगा। ये 2 सूंड वाले हो गए, हैं, एक एक करके बताया, हैं, बहुत सुंदर कथा है ये भाई। So this story is very beautiful. और शायद मैं तो नाम सीरियल से नहीं बोल रहा, I'm not telling names in serial. I में उसमें है, have to check exactly एक जगह देखा what which Pandava saw. So I think that Bhim, पांडव में कोई हो, एक or maybe जगह another of the देखा Pandavas, जाए, they saw एक ही साथ में 7 कुएं हैं, there were 100 wells, में पानी है, बीच में जो कुआं जो है, कुआं है ना, you know, the उस well, में पानी नहीं है, but in the middle well there was no water. How is it possible? हैं? तो भगवान ने कहा देखो कलियुग में मनुष्य Bhagavan क्या said, करेगा? because the human beings in Kali Yuga, they दूसरे will के खिलाएंगे, feed the others, they will honor the others, किंतु अपने माता पिता but they will not serve their own parents. नहीं करेंगे, हैं? कलियुग के मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो जाए, This is the tendency of the human beings in Kali Yuga. अपने धन सबको मिलाएंगे, सबको दे देंगे, They will give their money to everyone, किंतु घर में जो है अपने जो माता पिता but their own parents, old parents in their house, they will not take care of them. और एक जगह क्या देखा, So in another place, another Pandava saw, अर्जुन देखा कि कोई देखा, maybe I think Arjun or someone, I'm not telling the names in serial. गीध पक्षी जो है So there was an eagle. वो क्या कर रहे हैं ना, उनके So in all the feathers of the eagle, मंत्र लिखा हुआ all the Veda mantras were written down on these feathers of the eagle. But the eagle was तरह के वस्तु को खा रहे eating rotten things. हैं। तो भगवान के पूछने लगे ऐसे So the Pandavas asked Bhagavan why. So Bhagavan said, in Kali Yuga the people, पाठ आदि अध्ययन करेंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे, they will read the Shastras, they will study the Shastras, मर्मार्थ जो but है they will not वो समझ नहीं पाएंगे, understand the real meaning of the scriptures, कर पाएंगे, and they will not be able to follow this behavior, खाएंगे उल्टी good सीधी, behavior. They will eat any और bad things, उनके उपदेश देंगे दूसरी, but externally they will give instruction to the people and so many things. और ऐसे करके मैं है बहुत ये समस्त जो है उसमें दिखा गया है। चलो समय आने पर बताऊंगा मैं, Okay, later I tell. लिखा है मेरे कॉपी में है, I have written in my copy. Sometimes I speak this तो katha. ये समस्त जो है वर्णन होते जा रहे हैं, आगे काल जाकर के So गीता के tomorrow अभी we'll तक continue. 6 नाम हो गया, Now we're speaking about the 6th name of the Gita. ये और बाकी जो है नाम काल हम Rest tomorrow. We will study tomorrow. Guru Premanandi. अच्छा देंगे दूसरी है।